लास्ट सेक्टर की करते हैं, फिर आगे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले क्लास में हमने सेल वॉल इनहिबिटर्स पढ़े। सेल वॉल इनहिबिटर में पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम, सेफलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, क्या कहते हैं, कार्बापेनम्स और एस्टियोनाम थे। फिर वेनकोमाइसिन था और साइक्लोसेरिन था और बेसिट्रिसिन था। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन में डिफरेंस है एज कंपेयर टू सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन, और उनमें जो है टेट्रासाइक्लिन है, ग्लाइल साइक्लिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, मैक्रोलाइड्स, कीटोलाइड्स हैं और मिसलिनियस हैं। ठीक हो गया। दो मेजर एरिया हैं प्रोटीन सिंथेसिस के फैक्ट्री, दैट इज नोन एज राइबोसोम। एक है 30S सब यूनिट और एक है 50S सब यूनिट। सिर्फ टेट्रासाइक्लिन और अमीनोग्लाइकोसाइड जो है वो 30S पे काम करते हैं, और सारे जो हैं मेजॉरिटी जो है वो 50S सब यूनिट पे काम करके उसको इनहिबिट करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस पहले समझने से फिर ही उसकी इनहिबिशन समझ आती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में फिर हमारे पास मुख्तलिफ स्टेप्स थे। प्रोटीन सिंथेसिस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, दैट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम आरएनए। तीन चीजें उसमें इंपॉर्टेंट थी, तीन स्टेप्स: इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन वो है जब पहला अमीनो एसिड स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है ट्रांसफर आरएनए की बुनियाद पे, और वो आपके शुरू कर देता है। तो एलोंगेशन होती है, अमीनो एसिड आते जाते हैं, अटैच होते जाते हैं। तो जब रिक्वायर्ड सीक्वेंस और रिक्वायर्ड नंबर के अमीनो एसिड आ जाते हैं, पॉलीमर बन जाता है, तो फिर हमें उसको हाइड्रोलाइज करके टर्मिनेट करना होता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस है। इसमें तीन कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। मैसेंजर आरएनए जो कोड लेके आता है कि प्रोटीन जो है वो किस अमीनो एसिड की सीक्वेंस और कितने लेंथ का होगा। राइबोसोम जहां पे ये सारा कंट्रोल सिस्टम चल रहा होता है, अमीनो एसिड कब आएगा, किस सीक्वेंस में आएगा, कहां पे अटैच होगा, तो ये सारा काम जो है वो राइबोसोम उसको कंट्रोल करता है। और ट्रांसफर आरएनए जो अमीनो एसिड को लेके आता है, जो कमांड आपको कोड के तौर पे मिलता है, उसी कमांड के मुताबिक ट्रांसफर आरएनए उसको लेके आता है। कहां से लेके आता है? साइटोप्लाज्म से लेके आता है। कहां पे लेके आता है? राइबोसोम पे लेके आता है। जनरली हमने क्लासिफाई किया था कि हर एक अपनी अपनी जगह है फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो है दो साइट, अटैचमेंट साइट और पेप्टाइडल साइट, इसी की बुनियाद पे सारी एक्टिविटी, सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंट्रोल होते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड यहां पे इनिशिएशन को इंटरफेयर करता है। टेट्रासाइक्लिन ये 30S पे अमीनोसाइड ट्रांसफर आरएनए को इंटरफेयर करता है फॉर इट्स एक्टिविटी। और जो क्लोराम्फेनिकॉल है वो पेप्टाइडेशन को इंटरफेयर करता है, और जो मैक्रोलाइड्स हैं वो एलोंगेशन को इंटरफेयर करता है। नाउ वी नीड टू डिस्कस सम ऑफ दोस मेंबर्स। समझ का नहीं आ रही है, रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दें। तो रिकॉर्डिंग शुरू होने का मतलब ये कि आप सो जाएं। सो जाएं। अच्छा, Tetracyclines are broad-spectrum antibiotics that inhibit protein synthesis. In contrast to penicillin and cephalosporin, these are bacteriostatic. सही है? वो bactericidal थे, ये bacteriostatic है. Two major limitations are associated to tetracycline: bacteriostatic nature and has got prominent adverse effect as compared to cell wall synthesis inhibitors. All tetracycline have similar mechanism of action. We will see that there are sub-members of tetracycline. Tetracycline एक पूरी क्लास है, उसमें मुख्तलिफ मेंबर्स हैं। सही है? तो इनकी जो मेंबर्स की ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्लिनिकल इंडिकेशन है, एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल है, दे आर सेम एक्सेप्ट फॉर देयर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। दिस इज जनरल केमिस्ट्री। अच्छा भाई बात सुने,
आज मैंने स्पीड जरा तेज रखी है, तो जरा आप जरा जाग के सुने। अच्छा, वो कल जो मैंने जितना टाइम लिया था ना मैकेनिज्म पे, तो आज उसको मैंने कैश करना है, तो आप काइंडली जरा कंसंट्रेट करके सुनते जाएं। This is general chemistry, 4 cycle, tetra, 1, 2, 3 and 4. इस साइड से हो या उस साइड से हो, इस साइड से चूंकि नंबरिंग है related to attachment functional groups 1, 2, 3 and 4. These are which are being replaced and corresponding different types, different members of tetracycline can be achieved. You see for chlorotetracycline at replacement R6, these functional groups are being replaced. Oxytetracycline, tetracycline, dimicrocycline, methacillin, doxycycline and minocycline. मार्केट में डॉक्सी और मिनोसाइक्लिन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और तीसरा जो है वो टेट्रासाइक्लिन ही इस्तेमाल होता है। बात करते हैं क्यों। Classification, we got groups based on route of administration, absorption, half-life and dosage. Short acting, we got chlorotetracycline, oxytetracycline and tetracycline. Most of these short acting are obtained from natural sources as compared to semi-synthetic and synthetic that belongs to intermediate or long acting. So they are either orally administered parenterally or some of those can be topically provided as well. Absorption has got 30 to 60%. Half-life is relatively shorter as compared to other, just 6 to 8 hours that can be extended to 12 hours. ठीक है? Forget about dosage. Intermediate acting, most of those are oral, where absorption is up to 80% and working half-life is up to 15-16 hours. Long acting, doxy and minocycline, these are, I've told you, one of among tetracycline most widely used clinically, and reason is for its long activity as well as oral absorption. तो oral absorption जो है वो 95% है, 100% है if that is taken related to that stomach condition, either empty or that is filled. So you can expect for 100% absorption. And half-life can be extended to 20 hours. And you can see for reason why they are clinically more significant as compared to other. आमतौर पे डॉक्सी और मेनोसाइक्लिन ही इस्तेमाल होते हैं टेट्रासाइक्लिन में, और रीजन मैंने बताया लॉन्ग एक्टिंग है और ओरल है, चूंकि क्या कहते हैं ज्यादा फिजिबल है फॉर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन और ज्यादा फिजिबल है फॉर पर्सनल यूजेज एज कंपेयर टू other where parenteral administration is required. Mechanism of action for tetracycline belongs to protein synthesis inhibition that take place in ribosome. Eukaryotic and prokaryotic ribosome are different. This provides basis for selective antimicrobial toxicity. Bacterial ribosome consists of 50 S subunit and 30 S subunit, whereas in mammalian ribosome, the combination is 60 and 40 S subunit. Other elements involved in peptide synthesis are messenger RNA, which form the template for protein synthesis, and transfer RNA, which specifically transfer the individual amino acid to the ribosome. जैसे सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ. Ribosome has 3 binding sites for transfer RNA, termed as A, P, and E. A for attachment site, P for peptide site, E for expel site. To initiate translation, messenger RNA transcribed from DNA template. सही है? Transcribe क्या मतलब? DNA messenger RNA के थ्रू कोड भेजवा देता है. इसको हम कहते हैं templation. And that is attached to the 30S subunit of the ribosome. तो वो जो कोड DNA अपने भिजवाता है न्यूक्लियोटाइड कोड्स, वो मैसेंजर आरएनए लेके आता है और कहां पे उसको अटैच करता है? 30S सबयूनिट पे अटैच कर देता है. तो उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट पहले कौन देता है? राइबोसोम देता है. कौन सा यूनिट? 30S सबयूनिट. अच्छा, subsequently the 50S subunit then binds to 30S subunit to form a 70S subunit.
which move along the messenger RNA such that successive codons of messenger pass along the ribosome from the A position to the T position. Antibiotics may affect protein synthesis in any of these stages. ये है, ये टेट्रासाइक्लिन है, ये मैसेंजर आरएनए, ये A फॉर अटैचमेंट साइट, P फॉर पेप्टाइड साइट, ये जो है वो ट्रांसफर आरएनए है, ये अमीनो एसिड है, लेके आता है साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर आरएनए कहां पे, तो वो अटैचमेंट साइट पे आ जाता है। आप हैं? जी सर। आप हैं? यस सर। अच्छा, ये मैसेंजर आरएनए का स्ट्रेन है, यहाँ पे कोड्स बने होते हैं, कोड लेके आता है 30S सब यूनिट, उसको ले लेता है। 30S सब यूनिट पे तीन साइड्स हैं, ए साइड अटैचमेंट, पी साइड पेप्टाइडल और एक तीसरा है यहाँ पे शो नहीं हुआ, एक्सपेल साइड ई। बहरहाल स्टार्टिंग यहाँ ए सी होती है जब आपका ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड लेके यहाँ पे अटैच करा देता है। तो ये इनिशिएशन है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एक इनिशिएशन ये है कि राइबोसोमल कॉम्प्लेक्सेट करता है, पॉलीसोम बनाता है। एक मोनोसोम 30S का है और जब इसके साथ जब 50S आके बन जाता है, कॉम्प्लेक्सेट करता है, 70S बन के आता है तो उसको हम पॉलीसोम कहते हैं। तो अब वो जो स्टार्टिंग ट्रांसफर आरएनए है वो स्टार्टिंग अमीनो एसिड लेके आता है। नाउ दिस is being interfered by this tetracycline because attachment site is interfered to be attached with transfer RNA that contain amino acid. Now, if this is being interfered, mean amino acid will not be available for protein synthesis initiation as well as for elongation as well as for rest of that mechanism. तो ये सारी कहानी इधर लिखी है। Steps in bacterial protein synthesis and target of several antibiotics. Amino acids are shown as number cycles. The 70S ribosome is shown with its 50 and 30S subunit. In step 1, the charge transfer RNA unit carry amino acid 8 bind to receptor site A on the 70S. Peptidal transfer RNA at the donor site, the amino acid 1 through 7 then bind to the amino acid chain to amino acid 8, transpeptidation. The tetracycline bind to 30S subunit and prevent binding of incoming charge transfer RNA unit and subsequently do not allow further elongation of provision through inhibition of provision of amino acid to that extension of polymer. If that polymer is not being extended, it means required protein will not be formed. If required protein is not formed, it means that working and physiological functioning of bacterial cell cannot be executed. बात आपको समझ आ रही है? जो कल थे तो उसको समझ आ रही होगी, जो सिर्फ आज आए हैं तो फिर उनको मुश्किल होगी। बात आपको समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो एक तो ये है ना कि वो प्रोटीन नहीं बनाता, तो प्रोटीन ना बनाने का मतलब ये है कि उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग तो इंटरफेयर करेगी लेकिन वो किल नहीं हुआ। इस वजह से हम कहते हैं बैक्टीरिया जो टेट्रासाइक्लिन है वो बैक्टीरियोस्टेटिक है, सिडर नहीं है। सही हो गया?
अब ये सेडल कैसे बनेगा? सेडल तब बनता है जब फेगोसाइटोसिस होती है, वो बॉडी जो उसको फिर फेगोसाइटोस करके ले लेता है, तब जो है वो बैक्टीरिया एरिडिकेट होता है. So protein synthesis that is being interfered, mean multiplication is stopped, and already formed bacteria will be phagocytosed by that host. That is second version how this protein synthesis works. देखें, ये टेट्रासाइक्लिन है, ये टेट्रासाइक्लिन है और ये A है, ये अटैचमेंट साइट है. तो इस अटैचमेंट साइट पे जाके ये 30S सब यूनिट, ये देखें ना, ये 30S सब यूनिट. तो टेट्रासाइक्लिन इस 30S सब यूनिट पे पोजीशन A पे जाके अटैच होता है. तो ट्रांसफर आरएनए को नहीं छोड़ता कि वो A पे आके अटैच हो और अमीनो एसिड को जाके उस पेप्टाइड का हिस्सा बना सके. बात ठीक है? Yes, sir. Kinetics of tetracycline. All tetracycline are administered by oral route. All तो नहीं है, majority हैं, parenteral भी हैं, topical भी हैं. Oral absorption of tetracycline is somewhat incomplete and irregular. The absorption is lowest for chlorotetracycline 30% and maximum for minocycline, which is 100%. Doxycycline 95%. Absorption of tetracycline is interfered by concomitant ingestion of milk and products along with the antacid. तो बस इसमें काइनेटिक्स में टेट्रासाइक्लिन में सबसे इंपॉर्टेंट बात उसकी जो है ना, वो या उन फूड के साथ है जो वो ना हो, कैटायोनिक एनायोनिक कॉम्बिनेशन के ना हो, एंटासिड ना हो, कैल्शियम कंटेनिंग ना हो. बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है. Calcium, iron, magnesium salt, bismuth salicylate and alkaline medium, they form chelates with divalent and trivalent cations which are insoluble and unabsorbable for those tetracyclines. So tetracycline will not be able to be absorbed from GIT if they are being added, if they are being given along with those food items which are provided with calcium ions or iron ions or magnesium ions. Thus milk, antacid and oral iron reduce absorption of these tetracycline. These should be given 1 hour before or after tetracycline. जो ये चीजें हैं ना, मिल्क है, एंटासिड्स हैं, तो उनको टेट्रासाइक्लिन के साथ नहीं देना चाहिए, 1 घंटा आगे पीछे देना चाहिए. Tetracycline are well distributed into tissue and body fluid. They can cross placenta but not blood-brain barrier. They are mainly excreted in urine by glomerular filtration and should be avoided in presence of renal dysfunctioning. However, minocycline and doxycycline are safe. They are being eliminated by biliary excretion and can be given in renal dysfunctioning. तो माइनो और डॉक्सी क्यों हम देते हैं, ज्यादा क्यों हम देते हैं? क्योंकि वो बिलियरी एक्सक्रीशन के थ्रू एलिमिनेट होती है बॉडी से. लॉन्ग हाफ लाइफ है 24 आवर. पॉइंट 1. दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? रीनल एक्सक्रीशन नहीं है. दूसरी बात, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है. तीसरी बात. चौथी बात, ओरली हम दे सकते हैं, पेरेंटल की जरूरत नहीं होती. तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे हम डॉक्सीसाइक्लिन और मेनोसाइक्लिन को ज्यादा प्रेफर करते हैं. लेकिन इनके अपने एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वो फिर बाद में पढ़ते हैं. लेकिन क्लिनिकली जस्टिफिकेशन यही 4 पॉइंट्स हैं. रीनल एक्सक्रीशन नहीं है, पहली बात. रीनल एक्सक्रीशन हुई तो फिर ये टेट्रासाइक्लिन, जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, वो आमतौर पे उनकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है. तो नहीं है, तो इस वजह से वो किडनी पे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं देते. पॉइंट 1. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है थ्रू जीआईटी 100%. तीसरा लॉन्ग एक्टिंग है और चौथा feasible route of administration. Some tetracycline undergo enterohepatic circulation. Some of those also pass into mother milk. Passage of tetracycline into mother milk and fetal circulation expose fetus and sucking infant to tetracycline toxicity. Carbamazepine, phenytoin, barbiturate and chronic, बहुत सारी बातें हैं. अच्छा, ये डिफरेंस है. देखें, अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो फिर आप इसके सी मैक्स को देखें. सी मैक्स आ जाता है वो 1.7 1.8 माइक्रोग्राम पर ml तक. मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं टेट्रासाइक्लिन विदाउट गिवन along with
फूड आइटम और मिल्क। तो अगर मिल्क के साथ देते हैं तो फिर उसकी जो है ना सी मैक्स आती है, वो आ जाती है वो 0.2 0.3 पे। ये देखें आप, ये रेड जो है वो मिल्क के साथ है। तो वो जो कैटाइंस हैं, एनाइंस हैं, उसको क्लियर कर देते हैं, टेट्रासाइक्लिन को नहीं छोड़ते कि वो एब्जॉर्प्शन हो जीआईटी से। एंटासिड्स जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो वो भी इंटरफेयर करते हैं और वो भी आपके सी मैक्स को इतना कम कर देते हैं एज कंपेयर टू एम्प्टी स्टमक। आप देखें, आपको समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। Antibacterial spectrum are broad. These are broad spectrum antibiotics, but are static and effective against gram-positive and negative bacteria. The organism inhibited by tetracycline include H. influenza, Brucella, Pneumococci, Vibrio cholera, Gonococci, Actinomycetes, Chlamydia, Rickettsia, and Treponema. Clinical uses. Are tetracycline are drug of choice for chlamydia infection like trachoma, mycoplasma pneumoniae infection including pneumonium, rickettsial infection, typhus fever, spirochetes infection, actinomycete infection। ये जितने भी हैं स्पायरोकीट्स या एक्टिनोमाइसीट्स या टाइफस हो गया, ट्रैकोमा हो गया, there may be a difference for their organs which are being adversely affected. Trachoma, for example, eyes पे adverse effects देते हैं, और दूसरे जो हैं वो दूसरे organs पे देते हैं, लेकिन symptoms almost source are mostly related to bite of some insects related वो होते हैं, या एनिमल्स रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इन 4-5 में ये बात कॉमन होती है, इंसेक्ट्स बाइट के साथ है या एनिमल ब्रीड के साथ है, एनिमल ट्रांसमिशन के साथ है। दूसरी बात और तीसरी बात ये कि सिम्टम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मलेज, बॉडी एक, फीवर एंड सम ऑफ दोज जीआईटी डिस्टर्बेंसेस। ये 4-5 सिम्टम्स जो हैं दे आर कॉमन इन ऑल ऑफ दोज। Tetracycline have been used for intestinal amoebiasis and in malaria, effective in positive and negative bacteria against. Tetracycline usually in combination with amino glycoside is indicated for plaque and brucellosis. 3 mechanisms are known for development of resistance against tetracycline: impaired influx or increased efflux by an active transport protein pump. एक इन्फ्लक्स है, अंदर छोड़ना है प्रोटीन, वो प्रोटीन जो आपको इस टेट्रासाइक्लिन को लेकर आप प्रोटीन तक ले जाए, बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म में ले जाए, ठीक है ना, इन्फ्लक्स। इफ दैट इज बीइंग इम्पेयर्ड, जो इन्फ्लक्स मैकेनिज्म है फॉर टेट्रासाइक्लिन, इफ दैट इज बीइंग इम्पेयर्ड और इफ्लक्स इज बीइंग एक्टिवेटेड, इज इंक्रीज्ड, प्रोटीन तक साइटोप्लाज्म तक नहीं पहुंचा और बाहर ही बारोबारी कोई ऐसा प्रोटीन मिल गया उसको कि वो उसको पंप आउट कर दे, सही है। सो टेट्रासाइक्लिन विल नॉट बी अलाउड टू बी एक्टिंग ऑन इट्स प्रोटीन सिंथेसिस फॉर 30 subunit, तो वो रेजिस्ट करेगा। Some ribosome protection due to production of protein that interfere with tetracycline binding to ribosomes, सही है। और enzymatic inactivation, the most important of these are production of efflux pump and ribosomal protection. बाज ऐसे एंजाइम हैं जो उसको इनएक्टिवेट करते हैं, केमिकली इनएक्टिवेट करते हैं, अल्काइलेट कर देते हैं, उसको केमिकली मॉडिफाई कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं। तो जैसे बीटा लैक्टेमेज था ना, क्लीव करता था बीटा लैक्टेम पार्ट ऑफ पेनिसिलिन को, इसी तरह ऐसे एंजाइम इनके खिलाफ भी होते हैं जो उनको केमिकली मॉडिफाई कर देते हैं, जो एक्टिविटी फिर शो नहीं कर सकते। These are formulation for tetracycline, but this doxycycline is the drug of choice because it requires 1 daily dosing, absorption is not impaired by food, and it is safely administered in renal impairment. Adverse effect GIT, you know that
सर डॉक्टर हैं। अच्छा, नाजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, ये आपको आता है नहीं आता? सर ये नहीं आता सर फार्मेसी में तो यही दो चीजें सीखी हैं, यस सर, और नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया। कुछ और भी सीखा है? कन्वर्जन्स कोमा एंड डेथ। आप आपकी वोकेबलरी अच्छी है फिर। एक और लफ्ज भी है, उसको हम कहते हैं एटसेट्रा। एटसेट्रा भी हर जगह काम आता है। If tetracycline have been used for more than few days, superinfection with Pseudomonas, protease-resistant chloroform, staphylococci and candida can take place. Overgrowth with these organisms lead to GIT upsets. वैसे आमतौर पे जितने भी सुपर इन्फेक्शन है वो तीन जगह पे ही नजर आते हैं, एक यूटीआई, एक जीआईटी और एक तीसरा जो है वो स्किन सॉफ्ट टिश्यूज है। सुपर इन्फेक्शन इन्हीं तीन चीजों पे ज्यादा प्रिवेलेंट है, एक यूटीआई, एक जीआईटी और एक स्किन सॉफ्ट टिश्यूज पे। अच्छा, pseudomembranous colitis with overgrowth of difficile is very serious and even may be fatal. Treatment is with oral metronidazole or vancomycin. अच्छा, there may be a deficiency of vitamin B because of that flora that is being responsible to produce those that are being killed by doxycycline and tetracycline. So there may be deficiency for those items. Supplementary vitamin B complex may relieve some of those symptoms associated with adverse effect GIT disturbances by these tetracycline. Bone and teeth, ये सबसे prominent adverse effect है for tetracycline. Chelate calcium, tetracycline chelate calcium, and gets deposited in newly formed bones and teeth, giving rise to a yellow or brown discoloration that ultimately leads to deformity and inhibition of growth. Tetracycline are therefore contraindicated during pregnancy, especially during the last 2 trimesters and lactation, and to infants and children below 8 years of age. बस ये याद रखें, टेट्रासाइक्लिन क्या है? टेट्रासाइक्लिन हम ज्यादा तौर पे क्या करते हैं? ज्यादा तौर पे अवॉइड करते हैं। ये याद रखेंगे आप, hepatotoxicity especially in pregnant women and in high doses. Renal toxicity, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। वो टेट्रासाइक्लिन जो आउटडेटेड हो और उसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हों तो फिर वो एकमुलेट कर जाते हैं, एकमुलेट करते हैं नेफ्रॉन्स में और वही रीनल टॉक्सिसिटी काज करते हैं। बाज तो बिल्कुल अगर ज्यादा इस्तेमाल हो जाए तो फिर बिल्कुल नेफ्रेटिक सिंड्रोम वो भी काज कर देते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी वो भी हो जाता है, प्रोटीनूरिया वो भी हो जाता है। लेकिन जनरली टॉक्सिसिटी is related to those outdated tetracycline and their associated byproducts. Photosensitization, especially with dimeclocycline, vestibular disturbance with minocycline and high dose of doxycycline. तो vestibular disturbance का क्या मतलब हुआ? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या होगा? डिजीनेस, चक्कर वगैरह आते हैं, वर्टाइगो होता है, बिल्कुल, बॉडी बैलेंस खराब हो जाता है। बोन वाला सही समझ नहीं आया, क्या मतलब? सर ये कैल्शियम चिलेट ये किस तरह, इस चीज की समझ नहीं है कि क्या मैकेनिज्म है सर? जो बोन है, जो टीथ है, उसका बेसिक स्केलेटन किस चीज का है? सऊद जी सर, किस चीज का है? कैल्शियम का है ना? नहीं सुना आपकी आवाज जी सर। जी जी,
तो अगर कैल्शियम का है तो वो जो टेट्रासाइक्लिन है वो ऑलरेडी केलेट करता है उन क्वेटाइंस के साथ, उन एनाइंस के साथ। तो जो है, तो जितने भी नए नए बनते हैं तो वो एज ए किलेट्स जाके डिपॉजिट होते हैं। जो टेट्रासाइक्लिन है वो नए नए जो कैल्शियम डिपोजिशन है उसके साथ एज ए किलेटर जाके डिपॉजिट होते हैं इन बोन्स एंड टीथ। तो जब एबनॉर्मल किलेट बनते हैं तो वो कलर भी खराब करते हैं और ग्रोथ भी खराब करते हैं। सही है सर। तो वेस्टिबुलर डिस्टरबेंस का मतलब ये है कि वर्टाइगो होता है और जो है ना बॉडी बैलेंस खराब होता है, नाजिया फील होता है। सर आओ जी। सर जी एंटीबायोटिक्स के लिए प्रिस्क्राइब की सर जी सर मेदी द para isometrazole या dexlansoprazole सर 10 सर्जी वाले प्रिस्क्राइब की सर वाले प्रेस्क्राइब की गई। यस सर। आमतौर पे उनकी केमिस्ट्री की बुनियाद पे या उसकी जो जीआईटी सेंसिटिविटी है उसको काउंटरएक्ट करने के लिए। लेकिन जैसे आपने अभी सुना ना कि टेट्रासाइक्लिन के साथ दूसरे ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर तो इतने नहीं, लेकिन जो लोकल इफेक्ट है ना मैग्नीशियम वाले या एल्यूमिनियम वाले वो जो है वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अदरवाइज ये जो एंटीबायोटिक के साथ हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो तो जीआईटी सेंसिटिविटी फॉर दोस एंटीबायोटिक और दैट डिस्टर्बेंस or that chemical nature of those antibiotic that may adverse affect pH of that gastric area उसको counteract करने के लिए है one of that reason। लेकिन बात चीजें जो हैं वो मेंबर टू मेंबर भी वो होती हैं। बाज ऐसे एंटीबायोटिक हैं जिनको जो है ना ज्यादा HCl सूट नहीं करता फॉर इट्स फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। तो ज्यादा HCl को कम करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए फिर ये प्रोटॉन पंप इसको हमें देना पड़ता है। तो दो वजह हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक ऑफ एंटीबायोटिक को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरा जो है लोकल इरिटेंसी और लोकल एडवर्स इफेक्ट से बचाने के लिए। देयर में भी सम अदर रीजन बट लेकिन ये दो जो है वो जनरल होते हैं। मेंबर टू मेंबर बाज स्पेसिफिक अगर हैं तो वो अभी मेरे पास जहन में नहीं है, अगर आपको जहन में है तो वो बता दें या आप पूछ लें तो फिर उसके मुताबिक फिर मैं देख लूंगा। यस सर ठीक है सर। अच्छा काम की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट इज दिस वन नाइट्रोबेंजीन पार्ट, दिस वन। This is just like for beta lactam in penicillin and cephalosporin. This nitrobenzene is major part of its chemical structure, which is responsible to give its activity regarding bacteriostatic action. तो क्लोराम्फेनिकॉल क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक है मेजरली। डोज वाइज बैक्टीरियोस्टैटिक भी है, बैक्टीरियोसिडल भी है, लेकिन जनरली क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक है। और इसकी जो एक्टिविटी है वो इस नाइट्रोबेंजीन के साथ है, इस नाइट्रोबेंजीन के साथ ये जो पिंक लगा हुआ है। This mechanism of action, you know, we have discussed for time and again. This is messenger RNA that contain codons. This is attachment site. This is peptidal site. Transfer RNA will have to take this amino acid, will be binding at attachment site, containing this amino acid, and that peptide will be transferred to this amino acid. Rather, this amino acid is being transferred to peptide. जैसे मैंने आपको कल बताया था, इस पूरा पेप्टाइड जो पहले से बना होता है तो उसको हम नए अमीनो एसिड के ऊपर फिर जाके अटैच कर देते हैं, तो सीक्वेंस तब ऐसे बनता है। अच्छा, दिस क्लोराम्फेनिकॉल is responsible to interfere this transpeptidation of older peptidal amino acid to new amino acid। ये जो ट्रांसफरिंग है यहाँ पे ये सी आपको नजर आ रहा है ना, ये आपको ट्रांसपेप्टाइडेशन में जाके इंटरफेयर करता है। आप क्लियर है? यस सर।
तो क्लोराम्फेनिकॉल और उसमें क्या फर्क हुआ टेट्रासाइक्लिन में, बताएं जरा। सर साइट ऑफ एक्शन का डिफरेंट है, जो टेट्रासाइक्लिन है वो अटैचमेंट साइट पे काम कर रही है और जो क्लोराम्फेनिकॉल है तो वो ट्रांसफर को इनहिबिट कर रहा है। 3 डिफरेंसेस हैं, एक 30S और 50S। क्लोराम्फेनिकॉल 50S सब यूनिट पे है और टेट्रासाइक्लिन 30S सब यूनिट पे है। डिफरेंस 1। डिफरेंस 2, वहां पे टेट्रासाइक्लिन इंटरफेयर कर रहा था किसी को अटैचमेंट साइट की एक्टिविटी को फॉर ट्रांसफर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए को अटैच ही नहीं होने दे रहा था। यहां पे क्या होता है, यहां पे जो है वो अटैचमेंट हो चुकी होती है, सिर्फ आपका जो अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड है उसको ट्रांसफर नहीं होने देता, उसको जो है वो पेप्टाइड नहीं होने देता। तो ये दो मेजर एरिया है। तो कहां पे अमीनो एसिड का ट्रांसपेप्टाइडेज इनहिबिट करना और कहां पे जो है अटैचमेंट साइट को इंटरफेयर करना। सो देयर इज मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन क्लोराम्फेनिकॉल एज वेल एज फॉर टेट्रासाइक्लिन। बात क्लियर ना? यस सर। ये लंबी कहानी पढ़ने की जरूरत है? नो सर, क्लियर नो है। सर, यस। नो सर। ये बस नहीं पढ़ते, अब जो डायग्राम है और जो वर्बल कम्युनिकेशन है उससे काम चल जाएगा, ठीक है? फिर आगे जाते हैं, काम हमारा लंबा है आज। अच्छा, antimicrobial spectrum for these chloramphenicol is primarily bacteriostatic, though high concentration have been shown to exert sedal effect as well against H. influenza and meningitis. It is a broad spectrum antibiotic active against nearly the same range of organisms, gram-positive and gram-negative cocci and bacilli, rickettsia and mycoplasma as tetracycline. There are differences which are either chloramphenicol was highly active against salmonella, including typhi, but resistant strains are now rare. B is more active than tetracycline against influenza, though some have got new developed resistance. Pertussis, Klebsiella, and meningitis and anaerobes, including bacteria, including bacterial fragilis. It is less active against gram-positive cocci, spirochete, certain enterobacteria, and chlamydia. Like tetracycline, it is ineffective against mycobacteria and pseudomonas, some of those proteases and fungi. Kinetic chloramphenicol is rapidly and completely absorbed after oral ingestion. It is 50 to 60% bound to plasma protein and very widely distributed. Volume of distribution is 1 liter per kg. Freely penetrate CS cavities and blood-brain barrier. It can cross blood-brain barrier. CSF concentration is nearly equal to that of unbound drug in plasma. It crosses placenta and secreted in bile and milk. Chloramphenicol is primarily conjugated with chloronic acid in liver and later is excreted unchanged in urine. Cirrhotic and neonates who have low conjugation ability required low doses, need for dose adjustment. The metabolite is excreted mainly in urine. Plasma half-life is 5 hours. It is increased only in renal failure. That half-life is increased in renal failure where the dose need to be not modified. Adverse effect, जिस तरह टेट्रासाइक्लिन का मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या था भाई? टेट्रासाइक्लिन का मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या था सर? ये बोन डिफॉर्मेशन और टीथ। जी जी बिल्कुल। सुप्रा इन्फेक्शन, जीआईटी डिस्टर्बेंस, सुप्रा इन्फेक्शन और बोन, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक एडवर्स इफेक्ट है। क्लोराम्फेनिकॉल को याद रखें, क्लोराम्फेनिकॉल का जिस तरह कैरेक्टरिस्टिक बोन डिप्रेशन था, क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन था टेट्रासाइक्लिन का, क्लोराम्फेनिकॉल का डिप्रेशन है।
डिफॉर्मेशन नहीं है, अच्छा बोन मेरो डिप्रेशन है। Chloramphenicol is most important cause of aplastic anemia, agranulocytosis, thrombocytopenia, and pancytopenia. Two forms are recognized: non-dose related idiosyncratic reaction. This is rare. And aplastic is the most common manifestation. Apparently, a longer latent period of onset of neuroaplasia is associated with high mortality. Dose and duration of therapy-related myelosuppression, a direct toxic effect predictable and probable due to inhibition of mitochondrial enzyme synthesis in erythropoietic cell. This is often reversible with long-term sequelae. Liver and kidney disease predisposes to such toxicity. क्या बात आई समझ? आसान अल्फाज पता है क्या? आसान अल्फाज ये हैं, आसान अल्फाज ये हैं कि बच्चों में अनप्रेडिक्टेबल इडियोसिंक्रेटिक, ठीक है, वो जो है डोज डिपेंडेंट नहीं होते, ड्यूरेशन डिपेंडेंट भी आमतौर पे नहीं होते, और उसका जो मेजर मैनिफेस्टेशन है वो एनीमिया होता है, एप्लास्टिक एनीमिया। आपको समझ आइए? और जो डोज और ड्यूरेशन बेस्ड वो है, तो वो है माइलोसप्रेशन, और वो तब ज्यादा होता है जब उस पेशेंट की लिवर या किडनी डिजीज भी हो। ये इस पूरे स्टेटमेंट की समरी है। मैं फिर बोलूं, आपको समझ आइए? रिपीट करें। बच्चों में खासकर जो ग्रोइंग एज वाले होते हैं, जो मेच्योर नहीं होते, सही है, अप टू 8 इयर्स, अप टू 10-12 इयर्स, वहां पे ये होता है कि जो क्लोरम्फेनिकॉल है वो अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स इफेक्ट देता है, और उस एडवर्स इफेक्ट का मेजर मैनिफेस्टेशन क्या है? वो एप्लास्टिक एनीमिया है। ये आपको समझ आइए? यस सर। और जो मेच्योर लोग हैं, जो डेवलपमेंट स्टेज से गुजर चुके हैं, आई एम टॉकिंग फॉर दैट बोन मैरो, अगर उनकी मेच्योरिटी हो चुकी है तो वहां पे फिर क्लोरम्फेनिकॉल एडवर्स इफेक्ट तब देता है माइलोसप्रेशन फॉर्म में, उसकी मैनिफेस्टेशन माइलोसप्रेशन होती है, और वो तब देता है जब आप डोज और ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दो। वहां पे जो चाइल्ड थे, वहां पे डोज और ड्यूरेशन से मावरा एप्लास्टिक एनीमिया था, इडियोसिंक्रेटिक था ना, और जब एडल्ट होते हैं, जब मेच्योरिटी पे आती है, तो फिर वो डोज और ड्यूरेशन बेस्ड माइलोसप्रेशन आती है। ये इसका मेजर डिफरेंस है बस। You got it? Yes, sir. Hypersensitivity in the form of rashes, fever, and phlana. Irritative effect, nausea, vomiting, well known. Superinfection, similar to tetracycline but less common. Gray baby syndrome, ये दो हैं, ये मेजर है, और ये बोन मेरो डिप्रेशन। बस ये दो याद रखें। आई एम टॉकिंग फॉर क्लोरम्फेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन, सुप्रा इन्फेक्शन, जीआईटी डिस्टर्बेंस, एंड बोन मेरो डिप्रेशन। और डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन के साथ क्या था मेजर एडवर्स इफेक्ट? नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नहीं, हेपेटोटॉक्सिसिटी सर। नहीं, डॉक्सीसाइक्लिन के साथ क्या होता है? डिमेक्लोसाइक्लिन के साथ क्या होता है? फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजेशन और वेस्टिबुलर। अच्छा, ये याद रखें।
जी जी बिल्कुल। वेस्टिबुलर से मतलब है सर। वेस्टिबुलर से मतलब है यस सर। वेस्टिबुकोक्लियर नर्व याद है? यस सर, गुगुलो की जितम हाँ वाह बिल्कुल। नो सर आगे बात नहीं सके सकै Hace o sară lobe kai. Znači aga o sară lobe uki no bas aga kas mani da sar garzifa. सही है सर। सकै. तो कस्टमर जब सर सके मक्का करके दिया सर. अच्छा, gray baby syndrome it occurred when high doses are given prophylactically to neonates, especially premature. The baby stop feeding, vomiting become hypnotic and hypothermic. Vomited, the baby become hypotonic and hypothermic. Abdomen distended, respiration become irregular. I'm talking for that situation symptom of that baby that is taking high dose of Chloramphenicol. And that is presented with gray cyanosis developed in many of those babies. Followed by cardiovascular collapse and sometime death if that is not properly treated. Blood lactic acid is expected to be raised. It occurs because of inability of newborn to adequately metabolize and excrete chloramphenicol. At higher concentration, chloramphenicol blocks electron transport in the liver, myocardium, and skeletal muscle, resulting in the above symptoms. Chloramphenicol should be avoided in neonates, and even if given, those should be 25 milligram per kg per day. आपको क्या समझ आइए? जी, ग्रे बेबी सिंड्रोम में क्या बात समझ आई आपको? सर जब हम ज्यादा डोज देते हैं तो बेबी फीडिंग करना छोड़ देता है और वॉमिटिंग करता है, तो इस वजह से उसकी हाइपोटोनिक हो जाता है उसका फिजियोलॉजिकल, और हाइपोथर्मिक भी हो जाता है, मतलब उसकी टेम्परेचर भी कम हो जाती है और रिस्पायरेशन इरेगुलरिटी भी आती है सर। तो क्या होता है? हाइपोक्सिया, ग्रे साइनोसिस होती है और वो फिर सेकेंडरी कार्डियोवास्कुलर और कोलैप्स और डेथ को कॉज करता है। ठीक है। Clinical use of chloramphenicol for systemic infection is now highly restricted due to fear of fatal toxicity. We have discussed some of those. खासकर जो below 10 years हैं उसके लिए तो बहुत ही chloramphenicol बहुत ही वो है not preferred, just like tetracycline. Never use chloramphenicol for minor infection or those of undefined etiology. Do not use chloramphenicol for infection treatable by other safe microbials. कौन से हैं? पेनिसिलिन है, सेफलोस्पोरिन हैं. Avoid repeated courses. Daily dose should not exceed 2 to 3 gram. Duration of therapy should not be more than 2 weeks, and total dose of course should not be more than 28 gram. सही है? एक पर डे है तो पर डे 2 ग्राम. ड्यूरेशन है तो 2 हफ्ते मैक्सिमम, और पूरे 2 हफ्तों में कितना मैक्सिमम आप दोगे? 30 ग्राम से ज्यादा नहीं दोगे. Regular blood count, especially for reticulocyte count, may be detected dose-related bone marrow toxicity, but not the idiosyncratic type. ठीक है? जैसे हमने पहले कहा, idiosyncratic जो है वो most of the cases unpredictable type effects हैं. Combined formulation of chloramphenicol with any other drug meant for internal use is banned. इंडिया की बात कर रहा था, ट्राइपैथी की बात हो रही है. इंडिकेशन फॉर chloramphenicol, meningitis, anaerobic infection, intraocular infection, enteric fever, and this chloramphenicol can be considered second line of drug as compared to tetracycline in some infection, and also to erythromycin in whooping cough. Urinary tract infection, and that is also available for topical and conjunctivitis and external use infection. Chloramphenicol जो ड्रॉप्स में अवेलेबल हैं
या दूसरे उसमें है तो उसमें ये कंजक्टिवाइटिस और एयर इन्फेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करें, फिर ये क्या कहते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड शुरू करते हैं।